Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS guys. I hope you all are doing really great. And now we will be moving ahead in our series of current affairs of world geography. Basically, we were seeing the places in news month wise. Those who are coming directly to this video, let me tell you that we have already covered the January month, the February month, right? And now we are going to see the March month. So please do it in this sequence so that all the news, all the places which have been in news, you must be knowing it shortly. Because why? Because if you have seen the PYQ, you will understand. This is the 2021 PYQ, guys. Sorry, not 2021, but of 2022 prelims. Directly, they have asked Anatolia, often mentioned in news, Amhara. So, and if you will analyze that in from world geography, you will see 2 to 3 questions which are coming directly in this form, guys. I'll show you the 2023 prelims also. Cabo Delgado, Catalonia. Now, if you don't know any of this particular place, then you will not be able to solve the answer because of the options giving. Because how the options they are giving. Already, I have told you in the January month also. So always keep this thing in mind. Always go for the PYQs whenever you are seeing this series. You will understand that 2023 latest prelims, how they have given the question. Area of conflict mentioned in news. देखो Donbass, Kachin, Tigray, these were present in news. And इनका column कहाँ पर आता है? You will see in international news, the Hindu में, when you will see the international news page, short information is giving about Kachin, Tigray, in Sudan, in Ethiopia, civil war is going on. We try to understand the cause of it. Cause is not of importance. You just see the headline, even if you don't know about in detail the conflict in Tigray region, Kachin region, doesn't matter. What matters from the world geography point of view is, do you know that exact places? So January, February, we have already seen. You will see that Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, how they are giving this, right? So I have already told you that how you have to utilize world geography. First of all, if you haven't done world geography series or you haven't started world geography, then I would recommend you world geography playlist, extensive playlist. For every continent, I have put like 4 videos, right? So extensive lectures you should follow, which are freely available on YouTube. Okay? Or you have read world geography once. Now you just have to revise. Then I would ask you to go for the marathon session. And then I would request you to come and update yourself with the current affairs, because it is not important that how you are understanding these places in news. What is important that how you will keep these places in your mind, so that whenever Europe come, all the islands, all the volcanoes should come to your mind, all the rivers should come to your mind, all the lakes should come to your mind. Understanding, so that way, when you will understand it in current affairs, your mind will hit like this, that okay, I have learned all the rivers of Europe, then this river is present in current affairs also, it is of utmost importance, I'll be focusing upon it. Understanding this is the right method. Otherwise आप haphazardly पढ़ोगे, इट विल नॉट बी यूजफुल गाइस, बिकॉज आप वो वापस भूल जाओगे. करंट अफेयर्स में क्या होता है कि मैं आपको रैंडमली चीजें बता रहा हूँ कि कोई यूरोप की जगह है, कोई एशिया की जगह है, कोई नॉर्थ अमेरिका की जगह है, उसमें हैप हजार्ड वे है. लेकिन आप एक फॉर्मेट से, अगर आपने मैराथन सेशन देख लिया, एक्सटेंसिव लेक्चर्स देख लिए, तो ये जो आप हैप हजार्ड इन्फॉर्मेशन रख रहे हो अपने पास, दैट विल बी अरेंज्ड इन दिस वे. Those people who are following me, they must be understanding what I'm trying to say. Otherwise, if you don't understand this, just follow me blindly, you will be able to solve surely 2 to 3 questions, guys, right? Otherwise आप देख लो, यहाँ पर आप solve भी नहीं कर पाओगे, because the way they are giving options is very difficult. Now they have made it like sure that the student should know all the statements, otherwise he will not be able to solve. वो जो आपका वो होता है ना, elimination method will not be working now. ठीक है? Let us start from the March month now. What we have to see in the March month, guys. So basically, March month is covered. We have already seen other places like in January month, in February month. And now, most of the things which I am going to tell you in this March month is the islands, guys. Those who are following the Sunya monthly current affairs, then in March month they will be seeing in miscellaneous न्यूज में आप देखोगे कि यहाँ पर ये सारी ऑलरेडी मेंशन्ड है. ठीक है, नाउ इनको एक बार देखने का, याद करने का काम हम करते हैं.
Let us see. These are all islands. Mostly these are islands, right? So let us see one by one. The first one is your Chagos archipelago. Chagos archipelago कहाँ पर हो सकता है guys? एक रफ आइडिया अगर आपको लेना है तो ये कहाँ पर हो सकता है? कैन यू गेस इट वेयर इट कुड बी? रफली वर्ल्ड मैप बनाना भी आपको आना चाहिए, ये तो मैं अभी ये ऐसे ही बनेगा, बट एक रफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको वर्ल्ड मैप की। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी, बे ऑफ बिस्के, आई हैव ड्रॉन इट रफली। जिन्होंने देखा है मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें हमने ढंग से ड्रॉ करने की कोशिश भी करी है, राइट। और यहाँ कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। चागोस आर्की प्लाजो और ज़्यादातर आर्की प्लाजो आपको कहाँ पर मिलते हैं? इंडोनेशियन आर्की प्लाजो कहाँ मिलता है आपको? यहाँ पे फिलीपींस वाला एरिया यहाँ पर मिलता है। ज़्यादातर आइलैंड्स आपने यहाँ पर देखे होंगे। कुछ आइलैंड्स मैंने आपको यहाँ के कैरेबियन आइलैंड्स याद करवाए थे, कुछ आइलैंड का ग्रुप मैंने यहाँ पर याद करवाया था आपको, राइट। तो चैगोस आर्किपेलागो कभी भी आपके दिमाग में आए तो आपको साउथ चाइना सी नहीं याद आना चाहिए, आपको ये वाला एरिया नहीं याद आना चाहिए। कैरेबियन यू शुड नॉट बी रिमेंबरिंग, यू शुड बी रिमेंबरिंग द एरिया ऑफ इंडियन ओशन नियर बाय दिस अफ्रीकन आइलैंड्स, मेडागास्कर, रियूनियन जो हमने देखे थे, नियर बाय इट यू विल बी फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। सो एग्जैक्ट पोजिशन यहाँ पर है, लेट मी शो यू इन द मैप ऑल्सो। चैगोस आर्किपेलागो इज इन इंडियन ओशन समवेयर लाइक इट, ठीक है। लेट मी शो यू, सी ओवर हेयर गाइस, दिस इज चागोस आर्किपेलागो, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, और मेडागास्कर के और दूर। लेट मी शो यू इन अदर मैप, सी ओवर हेयर, मालदीव्स के जस्ट नीचे यू विल बी सीइंग दिस टेरिटरी एज चागोस आर्किपेलागो। आई होप यू नो व्हाट इज आर्किपेलागो। आइलैंड्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्किपेलागो सराउंडेड बाय सी। यहाँ पर अपना इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में यू विल बी सीइंग दिस अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं चागोस आर्किपेलागो। तो हिस्ट्री में अगर आप जाओगे देन दीज वर द टेरिटरीज ऑफ यूके, ठीक है, दीज वर द टेरिटरीज ऑफ दिस मॉरिशियस यू आर सीइंग ओवर हियर, ठीक है। लेटर ऑन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड देम and they have control over both these Mauritius also and Chagos also. I am telling you in short, otherwise you have to understand this issue in international relations topic guys, right। वहां पर आपको डिटेल में थोड़ा समझना पड़ता है, आधे घंटे का टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है कि ये इशू चल क्या रहा है। मॉरिशियस, एंड इसमें इंडिया का क्या टेक है, व्हाट इज द टेक ऑफ इंडिया इन इट, दैट इज हाउ यू हैव टू सी इट। And any issue which you are seeing right now, you must be seeing about Israel and Gaza, Israel Hamas issue. You must not be seeing the issue that what is happening between these two countries, because we don't have to understand international relations from the country's perspective, their country's perspective, but from the Indian perspective. So Indian perspective always you should know, because in the mains examination they are going to ask you the Indian perspective guys, okay। So over here you will be seeing that this Mauritius part is Chagos archipelago. Later on British came and British occupied these territories. And when you will say independence, Mauritius got independence, this got independent country. Mauritius also claimed that Chagos archipelago should also get free from UK administration, or you can say UK possession. But UK defended the position of the Chagos archipelago, because over here you will find one very important base of US, that is UK, that is Diego Garcia. ओवर हेयर यू विल सी, देखो इस एरिया को अगर आप जूम करोगे चागोस आर्किपेलागो को, आपको ये मिलेगा, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक बेस मिलेगा दियागो गार्सिया। तो ये यूके का मिलिट्री बेस है, एंड दिस होल चागो आर्किपेलागो इज नोन एज BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, BIOT, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। एंड दिस चागोस आर्किपेलागो इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन मॉरिशियस एंड यूके, समझ गए। See over here, Chagos archipelago. Then they are basically Solomon Islands, Great Chagos Bank, Egmont Island, Coven, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया if you want to go in deep तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में थोड़ा समझ लो, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। You should know where you have to invest your time, because you will be attaining much more knowledge about anything, but if that is not exam relevant, that is of wastage guys, complete wastage। So over here you will understand that it is a disputed territory between Mauritius and Britain,
It is situated 1600 kilometers south of southern tip of Indian subcontinent. 19th century, Chagos were governed from Mauritius, and this Mauritius, Chagos were all British colony. But Mauritius became independent in 1968. You don't have to remember this, but understand after 20 years of Indian independence, Mauritius also got its independence. And then when Mauritius got independence, automatically they will claim that this particular Chagos archipelago is also ours. It should also remain under our authority. But it didn't happen, guys. UK referred to it as British of Indian Ocean Territory and retained the position of this Chagos archipelago. In Chagos archipelago, you will find the US air base, guys. US air base of Diego Garcia. I was telling you the UK base, no, US base. Basically, these are allies, right? So Diego Garcia is the US base. Diego Garcia is the largest island of the Chagos archipelago. This same matter went to the International Court of Justice also. So this is a whole lot of issue which has highlighted in maybe 2017, 2016. Then this issue was very old, right? But in the examination, how that question will come, I'll be telling you. Chagos. Then there will be certain other islands like Trinidad, like many more other islands like Reunion, and they might be giving you the country, or they might be giving you the ocean, or anywhere in the place. Like this question is going to come. समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन के लिए if you are going too much deep into the international history, then it is wrong. But from the international relations, you have to understand this, right? So Chagos archipelago you have understood, guys. Now move on to the Spratly Island. देखो Spratly Island, पैरासेल आइलैंड, ये सेम चीजें हैं. अब आपको यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा? स्प्रैटली. जैसे स्प्रैटली और पैरासेल आप सुन लो, पैरासेल आइलैंड, ये दो आइलैंड सबके टिप्स पे रहता है जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है. यू शुड गो टू द दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ साउथ चाइना सी फॉर स्प्रैटली एंड पैरासेल. चैगोस के लिए आप यहाँ पर गए, स्प्रैटली के लिए आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है? साउथ चाइना सी. लेट अस जूम इनटू साउथ चाइना सी, गाइस. अब साउथ चाइना सी में पहले आपको कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? ओवर हेयर वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पर आपको मिलेगा थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, लाओस. ओवर हेयर दिस इज इंडोनेशिया, ठीक है. यहाँ पर तीन कंट्री मैंने बताई थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सॉरी मलेशिया एंड ब्रूनी. ओवर हेयर दिस इज फिलीपींस, ठीक है, चाइना. This is South China Sea is surrounded by these countries. Let me show you. See over here, guys. तो ये आप गल्फ ऑफ थाईलैंड देख रहे हो, कंबोडिया, वियतनाम. कंबोडिया इज दिस. वियतनाम का आप टेरिटरी देखो, मार्क करो यहाँ पर, ठीक है. ये चाइना का एरिया हो गया ऊपर. ये पूरा फिलीपींस आर्किपेलागो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलेशिया एंड देन सिंगापुर ओवर हेयर. दिस इज होल इंडोनेशिया एंड ओवर हेयर यू विल फाइंड ब्रूनी, अ सेपरेट कंट्री. मलेशिया का थोड़ा पार्ट आप यहाँ पर भी देखते हो और नीचे वाला इंडोनेशिया वाला पार्ट. इतना पहले आपको क्लियर होना चाहिए. इफ यू दिस प्लेसेस आर नॉट ऑन योर टिप्स, आई एम अगेन सेइंग गो बैक एंड वॉच माय दिस एशिया फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, ठीक है. एक्सटेंसिव वाला में देखोगे सारा याद मिलेगा. आप अदरवाइज यू कैन गो फॉर द मैराथन सेशन टू. ओवर हेयर दीज आर सर्टेन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, गाइस. साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है. अगेन वन IR इशू, that what is happening in South China Sea, the aggressive policy of China to contain this South China Sea. What is that? You have to understand in South China Sea. You have to understand it in international relations. You will understand that China is following the historical perspective of 9-dash line rather than following the international laws. They are following this 9-dash line concept of historical agenda of their, right? So because of that, dispute is regarding that what islands come under what. So Spratly Island is one disputed land. One is the Paracel Islands over here. जो Paracel Island गल्फ ऑफ टोंकिन के बहुत पास में, हेनान के बहुत पास में. ओवर हेयर यू विल फाइंड द Paracel Islands, ठीक है. डाउनवर्ड यू विल बी सीइंग द Spratly Islands. दोनों का आपको किस पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव से these are the disputed regions between which countries, ये पता होना चाहिए. So these islands, this Spratly Island, which has been in news, are claimed by which of the countries? You are seeing Vietnam, and as per international laws, you will see that Vietnam is saying this Spratly comes under their territory, EEZ, Exclusive Economic Zone.
This EEZ you have to understand under the UNCLOS laws, ठीक है? UN के जो हमारे इंटरनेशनल ओशन के लॉज हैं वो आपको समझना पड़ेगा IR के अंदर गाइस, ठीक है? तो यहाँ पर वियतनाम इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू कंटेन दिस स्प्रैटली आइलैंड, फिलीपींस इज एक्सरसाइजिंग, दो कंट्रीज हो गई, वियतनाम, फिलीपींस. Over here you are seeing Brunei. Brunei is also claiming for Spratly Islands 3. China is claiming for claiming क्या, China का hold है Spratly Island में, right? And this fifth Vietnam, oh sorry, not Vietnam, but this Taiwan is also claiming. So total 5 countries are claiming over these Spratly Islands, guys. Now you must be saying that why this is in news. This is in news because of these issues only. ठीक है, कि कब क्या किसका डिसीजन आया एंड हाउ एग्रेसिव पॉलिसी इज फॉलोड बाय चाइना. ठीक है, सेम गोज फॉर चैगोस. द रीजन ऑफ देम इन बीइंग न्यूज इज बिकॉज दे आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, राइट? ओवर हियर यू विल सी इट इज अ डिस्प्यूटेड आर्किपेलागो इन साउथ चाइना सी. ये पता होना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है. ठीक है, एंड दे आर क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी एंड फिलीपींस, नॉट बाय मलेशिया, नॉट बाय इंडोनेशिया. You understand? ठीक है, ये अगर लिस्ट में आ जाए तो you have to cancel this. See this map. This is beautiful map. Over here you will understand. Paracel Island is also a disputed territory claimed by China and Vietnam only. So only 2 countries are claiming this Paracel Island. But whereas Spratly Island, you will see that it is claimed by, देखो ये कितना beautiful diagram है यहाँ पर, ताइवान, चाइना, वियतनाम, यहाँ से फिलीपींस आएगा आपको, यहाँ से ब्रूनी एंड मलेशिया. Not this Indonesia, guys, right? And sorry, I have told you that Malaysia is not there. Malaysia is also there, right? So Malaysia you have to add. I have told you that Malaysia is not. I have forgot to tell you that Malaysia is also there. So Malaysia also you will keep. Add over here also that Malaysia is there too. Okay. Again, see over here, parasol above, Spratly is downwards. One more remains in news, that is Scarborough Shoal. This also remains in news, Scarborough Shoal. So when you will understand this China's claimed territory, you will see as per 9-dash line they have claimed this whole area, 9 mile, right? Whereas UNCLOS convention laws of seas, international seas, you will find that only up to, you will see that you have to follow this EEZ line. That you will be understanding more in detail in your international relations. So mark this topic. Those who have not done, those who have done, just revise it. Third is your Macquarie Island. This is the island where it is located. It is a World Heritage Site, guys. Where it is located. ये थोड़ा सा difficult होगा. यूपीएससी में भी आपको जो 4 ऑप्शंस आने वाले हैं उसमें से 2 आसान होंगे, 2 मुश्किल होंगे. तो वहां पर भी आपको 50-50 गेस करके यू हैव टू गो अहेड. ठीक है, 2 बिल्कुल यूनिक होंगे. ठीक है, जो हम पढ़ भी नहीं रहे वहां से भी नहीं हो सकता, लेकिन वो 3 या 2 बिल्कुल हमने सुने होंगे. एनी गेसेस फॉर मैक्वारी आइलैंड? बहुत ही यूनिक आइलैंड आपको मिलेगा. ये ना अटलांटिक में मिलेगा, ना आपको इंडियन ओशन में मिलेगा, ना आपको साउथ चाइना सी में मिलेगा. ये आपको मिलेगा आपके सदर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर न्यूजीलैंड से नीचे, ऑस्ट्रेलिया से सदर्न एरियाज में यू विल फाइंड मैक्वारी आइलैंड. ठीक है, in this particular part. Let me show you. Over here you will see Macquarie Island near Tasmania, which is this strait. If you remember this strait, and we have divided Australia into certain parts. Do you remember? Yeah, if you have not seen our Australia series, then you see the Australia video of World Geography. You'll be understanding it more. तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्वारी आइलैंड. व्हाई इट इज इन न्यूज एंड लाइक व्हाट इज द यूनिकनेस अबाउट दिस मैक्वारी आइलैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स लोकेशन इज साउथ ईस्ट ऑफ तास्मानिया. दिस इज द ओनली पीस ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड विच इज फॉर्म्ड एंटायरली ऑफ ओशियनिक क्रस्ट. दैट मीन्स यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को नहीं मिलता. ओनली ओशियनिक क्रस्ट यू विल बी सीइंग ओवर हियर. दिस particular area is also under World Heritage Area, guys. Right, the only place is important from Macquarie. So from Macquarie you have to understand only one thing, that the feature of Macquarie is this is the only land present in the whole earth which is built on oceanic crust. Right, now this is very famous, Trinidad and Togo. This is very famous. I have taught you this in my series of South Africa, so you will see it in the Caribbeans.
Over here you will see, I have told you that there are n numbers of islands present in Caribbean, but you have to remember certain island, and in that particular certain which we have remembered, this Trinidad was one of them. So those who have done it must be remembering it. Over here you will see Trinidad and Tobago. देखो ये वेनेजुला है आपका, वेनेजुला. South Africa you will be seeing Venezuela. Over here you will be seeing this Trinidad and Togo. This Trinidad and Tobago. Very near to South Africa, South America region or Venezuela region, right? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 miles का. I have asked you to remember this Saint Vincent and the Grenadines also, जिसका किंग्सटाउन कैपिटल है, राइट? ये उसके अबव में आपको मिलता है. Now this Trinidad Island is the world's most important conservation stops for green turtles, which are endangered animals, right? And why it has been used? Because recently scientists have discovered rocks made from plastic debris in Trinidad Island, which is a remote turtle refuge in sparking alarm. This is sparking alarm क्योंकि यहाँ पर आपको plastic debris मिलना शुरू हो गई हैं rock के अंदर. This plastic rock is known as a plastic glomerate. ठीक है, ये ध्यान में नहीं रखना आपने, but you have to understand that why Trinidad has come in news and why it is very shocking, because it is home to the endangered species green turtles. Over here, see this particular this map. You will see this is Caribbean Sea. Jamaica, I have told you to remember. Cuba, Dominican Republic, Haiti, San Juan, Puerto Rico, which is there. Then over here you will find Grenadines, and over here Trinidad and Tobago. Now next you come to Aves Island. Aves Island is also in news because of this plastic glomerates, means plastic rocks. And this is a shocking news, guys. If you are learning environmental perspective, so you will understand this is very shocking that now hybrid rocks are getting formed. अभी तक rocks किससे मिलकर बनते थे? Minerals से. Minerals किससे मिलके बनते थे? Element से element, atom से, and atoms subatomic particles which you study in science. अब यहाँ पर because of this plastic which is not decomposed and remain there for millions of years, thousands of years, now mixing up with our geological structure and formation of this hybrid rocks is happening. And how and when, और इसका obviously consequence बहुत ही negative होने वाला है. तो कैसे impact करेगा ये नई studies find out हो रही है, इसमें सारे work कर रहे हैं guys, right? And you will be understanding it in the from the environment perspective too, very important. So Aves Island is one such place in India which has found that the remains of this plastic rocks or this hybrid rocks. Aves Island, where it is island present? Where is this island present? If anyone of you know, Aves Island is present in the Andaman area, guys. This Andaman Island, you know, one of the island, very small island, is Aves Island. Scientists have found this plastic rocks over there too. See over here. And over here, only two peoples live on this Aves Island. Both are male, right? So a team of marine biologists have stumbled upon a piece of rock that is plastic glomerate made from plastic from a beach in Aves Island. यहाँ पर आपको मिलेगा PVC polyvinyl chloride के remains देखने को मिलते हैं इस rock में. And this is one such finding, first such finding from India. So it is a cause of like shock to the whole human population also. Scientists are working upon it to understand more such impact of these rocks, right? Now come to your Solomon Island. Solomon Island, guys. Now this Solomon Island, आपने देखा है यहाँ पर कौन सा island देखा आपने? Over here, over here, over here, and over here these two. ठीक है? I hope you are must be saying Trinidad and Tobago, Chagos, Eves, Paracel, Spratly, and this one is your mcquary. Now one more island which we are going to see is of South Pacific Ocean and South West Pacific Ocean, nearby Australia only. Over here you will find one island as Solomon Island. This Solomon Island, right? See over here, guys. These are Solomon Island. ये वाली कौन सी country है, if you all know? So these Solomon Islands are present in this
ओशियानिया, नियर बाय दिस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे दिस सोलोमन आइलैंड, राइट. And the issue of Solomon Island, why it has been in news, because they are accepting China's grant, and China's basically is trying to have control over Solomon Islands. Also, there is ethnic cleansing, civil war situation is going on in Solomon Island too. So basically, Solomon Island is accused of compromising their independence. This is an independence island, independence country, independent country. So they are accused of compromising their independence by coming into various agreements. With whom? Who is the aggressive country over there? China. Yeah, now it is again a part of your international relations where you will understand this issue, not in very detail because this is the issue going on between two other countries. But from the Indian angle, you have to understand this issue for means. Right, this series is specifically on world geography, places and news, specifically for prelims. ठीक है guys, so we'll keep it that way. Otherwise मैं अगर आपको एक एक इशू अगर समझाने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल चैगोस का, सोलोमन का, that will be taking much time, right. बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे ये सारी चीज़ें. So let us move ahead. Now come to the Shetland Island. सोलोमन तक पहुंच गए. एव, स्टैंडर्ड, मैक्वेरी, स्प्रैटली, चैगोस, Shetland Island. Where is this Shetland Island, guys? This Shetland Island is over here north of this Scotland or UK territory. Over here you will find Shetland Island. ये हल्का सा आप मार्क देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जूम इन करोगे तो यहाँ पर मार्क आपको दिखेगा. This is Shetland Island. So it is where it is present, near this UK, northeast of UK. So this Shetland Island is an archipelago in Scotland. It is an important habitat for harbour seals, grey seals and otters. And this is one of the sanctuary you will find over here, Hillswick Wildlife Sanctuary. Not important, guys. What is the importance of the Shetland Island is its location. That's it. Some of the places you just have to know the location. I am again telling you, अगर आपने पहले कभी ये सुना नहीं होता, for example, question will come like Chagos, your Spratly, Saint Vincent and Grenadines. एक बार स्पेलिंग चेक करना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड एक आपके पास आ जाएगा सिनिया आइलैंड. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आने वाला है, लेट मी टेल यू. मैंने जो 2022 के लिए आई हैव प्रेडिक्टेड 2023 प्रीलिम्स, I have predicted some question like Donbass, Tigray, all have come in 2023 prelims, guys. So students who are following me for this 2023 prelims, they must be realizing the fact. Right now, I am telling you these type of questions for 2024 prelims. Okay, so how question will come? Chagos archipelago, they will write it as, for example, they will write it Mediterranean Sea. Spreadly, they will say it South China Sea. Saint Vincent and Grenadines, they will say it as Caribbean Sea. Sunya Island, they will say it as an Pacific Ocean. And your options will be like what? Only one correct, only one pair correct, only two pair correct, only three pair correct, all four pair are correct. Likewise question is going to come. What I'm trying to say, I'll be solving this too, but इस वे में क्वेश्चन आने वाला है. तो चैगोस तो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, स्प्रैटली साउथ चाइना सी में प्रेजेंट, सैंट विंसेंट कैरेबियन में, सिनिया आइलैंड हम देखेंगे, ये भी गलत है. तो ओनली टू आर करेक्ट. देख रहे हो, तो कैसे आपको पता होनी चाहिए चीजें. अगर सपोज आपको सिनिया के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस. तो आपके पास कौन सा पेयर बचते हैं? दो ऑप्शंस बचते हैं, ओनली टू एंड ओनली थ्री. देन यू हैव टू गो फॉर द 50-50. इस वे में क्वेश्चन करना होता है, बिकॉज हमें तीन पता होगा और एक नहीं पता होगा. दिस इज द यूनिकनेस ऑफ यूपीएससी. ये आपको समझना पड़ेगा, वो देता है ऐसे क्वेश्चंस, राइट. देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ सिनिया आइलैंड. सिनिया आइलैंड के लिए आपको जाना पड़ेगा ये वाले रीजन में, ठीक है. दिस इज योर पर्शियन गल्फ. इसको जब जूम करोगे तो आपको पता है यहाँ पर आपका यूएई है, ओमान है, यमन है, यमन, ओमान. यूएई का एक आइलैंड यू विल सी दैट इज सिनिया आइलैंड, राइट. यहाँ पर यूएई का एक आइलैंड है, ठीक है. लेट मी शो यू मैप. इधर देखो, ये आपका, पहले मैं आपको फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप समझना इसको.
दिस इज योर पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर कुवैत कंट्री है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। देन यू हैव ओवर हेयर बहरीन, राइट, एंड ओवर हेयर यू हैव यूएई। यूएई में यहाँ पर छोटा सा पार्ट, यहाँ आप यूएई के और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जूम इन करा है मैंने, यहाँ पर सिने आइलैंड, इसी को जूम इन करा है। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को जूम इन करा है, यहाँ पर आपको सिनिया आइलैंड मिलता है गाइस। एंड व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज, इट हैज बीन इन न्यूज बिकॉज over here scientists have found or archaeologists have found the oldest pearling town. So this here you will find the oldest pearling town, that's why it has been in news. Pearling town you must be understanding, pearls आपने देखे हैं ना, मोलस्क, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके, बाहर से हार्ड कवरिंग रहती है, पर्ल्स, राइट, वही चीज है। नाउ नेक्स्ट इज योर सिने आइलैंड, यू हैव सीन माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। देखो इटली में मैंने आपको कुछ बताए थे, माउंट वेसुवियस एंड ऑल। यहाँ पर आपको मैंने इंडोनेशिया में एक दो बताए थे, कराकटोआ, मेरापी, आपको याद रखना है अपने एक्सटेंसिव लेक्चर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी व्हेन आई वाज टीचिंग यू द साउथ ईस्ट एशिया। आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द वॉल्केनिक साइट्स ऑफ दीज एरियाज। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कराकटोआ एंड मेरापी, तो देखो मेरापी न्यूज में दोबारा आया है, राइट। एंड फॉर मेरापी यू हैव टू डाइव इट इनटू द, ये मलेशिया है आपका, सिंगापुर, यहाँ पर आपको दिख रही है सब चीजें, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के एरिया, दिस इज जावा आइलैंड। जावा में ये सारे एक्टिव वॉल्केनोज है, येलो में जो आप देख रहे हो, बिकॉज दिस इंडोनेशिया इज प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है रिंग ऑफ फायर, ये आपको पता होगा। और यहीं पर आपको एक ध्यान में रखना है, माउंट मेरापी जो इरप्ट होता रहता है, हाई मीन्स हाईली एक्टिव वॉल्केनो इट इज। When I was taking the class, I told you to remember one volcanic site over here in Bali also. So this is Java. So over here you will see Mount Merapi is one of the most active volcanoes located in Indonesia, and it is erupting since 1548. And Mount Merapi is an example of stratovolcano. एक तो स्ट्रेटिफाइड वे में फॉर्म होते हैं वॉल्केनो, ठीक है, एक होता है आपका शील्ड वॉल्केनोस टाइप। तो इट इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर रीजन। अच्छा, जब मैं आपको ये कंट्रीज वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, और हैव यू हर्ड अबाउट दिस जीलैंडिया कंट्री और कॉन्टिनेंट? नो, यू हैवंट हर्ड ऑफ इट। और जिसने पढ़ा भी होगा ये जानता होगा दैट जीलैंडिया डज नॉट एग्जिस्ट ऑन वर्ल्ड मैप, इट इज अ सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट गाइस। एंड नाउ साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड दैट दिस जीलैंडिया मस्ट हैव एग्जिस्टेड as a continental crest, but later on, like over the period of time, it has been submerged underwater. So you will see over here that in this particular region, here you will find Zealandia, which is submerged now. It is not visible. Continental crust is under the water. Okay, but scientists have confirmed that this continent must have existed, and there people must be having their local languages. Okay, scientists have confirmed that. See over here. This is Australia. Over here, it is being said that this is Zealandia. So Zealandia, scientists have confirmed the existence of missing continent known as Zealandia. It is a long, narrow microcontinent that is mostly submerged in South Pacific Ocean. So over here, Maori language was one of the constant continents of the ancient supercontinent called Gondwana, and it began to pull away from Gondwana roughly 105 million years ago. No need to remember this. Okay, guys. So basically, in today's March month edition, we have tried to see mostly islands. Over here you have seen the islands like, over here you have seen, can you name it? This Zealandia over here, two islands over here, Chagos over here, Merapi over here. Okay, in the extensive lectures which I have taught you in world geography, I have told you the islands of here also, I have told you the Caribbean islands also of this particular मेडिटेरियन आइलैंड ऑल्सो। ये आपका जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपकी रीलर्निंग है, रिवाइज हो रहा है, राइट। ओवर हियर आई हैव टॉट यू सम व्हाट मोर, यूएई वन, दीज आइलैंड्स यू हैव टू रिमेंबर। आप देख लो, अब आपसे कभी भूल नहीं होगी इन आइलैंड्स में, आई एम टेलिंग यू, यू हैव गिवन इट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। लास्ट में प्रीलिम्स में पहले ये सारी सीरीज रिवाइज कर लेनी है आपने दोबारा से, फास्ट स्पीड में, जस्ट रिवाइज इट। और कंटेंट पेज देख लेना है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू नोट कंटेंट, दैट डू आई नो दिस प्लेस, डू आई नो दिस प्लेस, लाइकवाइज यू हैव टू रिवाइज इट, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस मंथ, मार्च मंथ। बाकी छोटी मोटी प्लेसेस और भी बहुत होंगी, बट हम कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं जो प्रोबेबल पेपर में आ सकता है।
ठीक है, बाकी चांसेस बहुत सारी प्लेसेस है, हमें सारा थोड़ा ना देखना है, जो न्यूज में मेंशन्ड है, हाईलाइट हुआ है, दैट वी आर सी। ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू मंथ कंटेंट, राइट? वहां पर हम प्लेसेस एंड न्यूज देखेंगे फॉर द अप्रैल मंथ। ऑल राइट गाइस, सी यू टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिवाइज दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।